विद न्यू ट्रेडिशन, नए तरीके से साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज फार्मिंग लेवल पे काम नहीं चलेगा, इंडस्ट्री लेवल पे काम करना पड़ेगा। शायद कुछ लोगों को पिछले साल का डॉक्टर शर्मा का प्रेजेंटेशन याद होगा, वो बोले दिस इज एन इंडस्ट्री, दिस इज नॉट अ फार्मिंग एनीमोर। खैर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक पॉइंट सर ने वहां पर ऐड किया था कि हमारी ब्रीडिंग वाकई में खराब है, इसलिए शायद ये रेट्स इतने ज्यादा है। तो ब्रीडिंग क्यों खराब है कि हमने शायद कभी सोचा ही नहीं कि हमारी ब्रीड होनी क्या चाहिए। जब कोई नया फार्म आता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं कितनी अच्छी ब्रीड परचेस करके ले आऊं, वो ये सोचता है कि मेरा शेड कितना अच्छा बना लूं, राइट? अगर कोई मेरे से डिसएग्री हो तो बोलेगा जरूर। मैंने कई जगह ऑब्जर्व किया है। चलिए एक बार हम 20 या 22 लीटर 25 लीटर की जानवर ले आए ना, उसकी बच्चियां जब आती है तो 18 और 19 लीटर की आती है। कई लोगों ने हमसे बात शेयर किया, बोले यार 25 लीटर जानवर लाए थे, आज तो 21 लीटर की बच्चियां है हमारे पास। रीजन कुछ भी हो, लेकिन शायद हमने उस विषय में सोचा नहीं, लेकिन हम शायद सोचने की शुरुआत करना चाहते हैं। जमाने पहले आप देखते थे हमारे पास जर्सी का बहुत अच्छा स्कोप होता था, लेकिन धीरे धीरे शायद हम हॉलिस्टन की तरफ शिफ्ट हो गए गाय में। जबकि जर्सी में हमारे पास जो हमारे शायद इंडियन मार्केट से थोड़ी रिक्वायरमेंट है, फैट ज्यादा है, एसएनएफ भी हायर साइड है, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। क्यों? शायद प्रोडक्शन हमको कम मिलता था, एचएफ में शायद प्रोडक्शन ज्यादा मिलता था। लेकिन अब वो पिछले 5-7 साल से कहानी बदल रही है। हमारे साथ डेनमार्क से आए हुए मिस्टर ब्रायन हैं, जो लोग जर्सी पर आज की डेट में नंबर 1 इन वर्ल्ड जर्सी पर काम किया हुआ है इन लोगों ने, और जर्सी पे हायर फैट परसेंटेज, हायर प्रोडक्शन निकाल कर लेकर आए हैं इन कंपैरिजन टू हॉलिस्टीन। और आज आप देखेंगे कि क्या सिर्फ एचएफ ही है जो हमारी इंडस्ट्री को चला सकती है? नहीं, एचएफ में आज हमारे साथ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं कि एचएफ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जर्सी कैन बी एन आंसर फॉर दोज पीपल। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई एम इनवाइटिंग मिस्टर ब्रायन ऑन द डायस, प्लीज गिव अ गुड अप्लॉज टू दैट। चूंकि मिस्टर ब्रायन हिंदी नहीं बोल सकते, इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं डॉक्टर शर्मा जी से कि आए और थोड़ा सा उनको ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ यू नो इंग्लिश, जहां अटकेंगे वहां पर शर्मा जी थोड़ा सा, क्योंकि टेक्निकल व्यक्ति हैं, ज्यादा अच्छे से डिटेल कर पाएंगे। That's a please. My name is Brian Morsksted. I'm from Viking genetics, and thank you very much to allow me to come after a very, very impressive speaker. I really enjoyed it very much. So, and I would say, even though I don't understand Hindi, I fully understood your message, and I agree totally. Just to support what you have just heard, I can tell you, I come from Denmark. We have no natural resources, no oil or minerals, anything. So the only thing we have and still have is agriculture. So, and agriculture has built our country. This is farming. This is how it is. And I'm so proud to say I represent 1 million cows in my region. This 1 million is owned by 22,000 farmers. These 22,000 farmers, they own everything. They own Viking genetics. They own Viking Arla. Arla, I saw a study last year in India, is ranked the 4th biggest dairy company in the world. Amul is ranked the 9th biggest dairy company in the world. And just to say that this 1 million cow, these 22,000 farmers, they contribute with their products, their knowledge, their management, everything, their knowledge, put it into Arla, where they will create products like value added, among others. They provide cheese, milk, butter, everything. But they do a great earning. So I'm happy and proud to be here today and allowed to come here and
tell a little bit about one of our breeds. We have 3 breeds. So why pick Jersey? Well, Jersey is, we call it the golden choice for India. It's the golden choice in many countries. We have it all over. So why is it? I don't know. It's not possible to see the lower figures. The high solids. We have last year in average for all the Jersey milk that we have registered, and this is registered figures from about, we register figures from 1 million animals, yes, and the Jerseys are most likely around maybe 150,000. जर्सी के बारे में जो बात कर रहे हैं ब्रायन, थोड़ा सा मैं जो अभी इन्होंने गोल्डन, हमारे लिए इंडिया के लिए चूंकि हम हर बार बात करते हैं एचएफ की बात कर रहे हैं और अभी कई साल से एचएफ के सीमेन को लेकर आ रहे हैं, एचएफ यूज कर रहे हैं। बहुत बड़े जानवर होता है, बहुत ज्यादा फीड कंजप्शन होता है, प्रोडक्शन हाई होता है। अभी ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका प्रोडक्शन लेवल हाई है, तो जर्सी के साथ क्या क्या चीजें एडवांटेज अपने लिए हैं। तो जहां पर ये बता रहे हैं कि हाई सॉलिड्स 5 पॉइंट, इन्होंने बहुत सारी लगभग 10 लाख जर्सी के ऊपर में ये सैंपल किया है और सैंपल लेने के बाद में 5.97% एवरेज फैट परसेंटेज और 4.21% प्रोटीन ज्यादा मतलब एसएनएफ ज्यादा, और इंडिया में दूध जो है रेट डिसाइड होता है फैट और एसएनएफ के। Okay, thank you very much. And I also, I'll come back to that later. What we aim at is a very good structure, smaller animals but highly productive. गुड लोकोमोशन मतलब हमको जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पैरों की, हुप प्रॉब्लम जो एचएफ में सबसे ज्यादा हुप प्रॉब्लम होता है। कंपैरेटिव डाटा है, आगे और स्लाइड्स आएंगी उसमें और कंपैरेटिव डाटा मिलेगा। We have actually we have the world's best daughter fertility and easy calvings. इजी calvings मतलब अपने आप बड़ा बच्चा मतलब फिर तकलीफ ही तकलीफ। So the most important over here is longevity, because we breed for health, we breed for efficiency, we breed for production. We don't breed for shows, we breed for production. So we have been breeding for health more than 40 years. We've been breeding for production. Even so, in general, we've been breeding, our breeding history is around 100 years. जर्सी जो जो डेवलप कर रहे हैं ये कंटिन्यूअसली, वो जर्सी डेवलप कर रहे हैं हेल्थ ट्रेड्स के ऊपर। एक्चुअली किसी भी ब्रीड को डेवलप करने के लिए अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, उसके ऊपर उस पर काम किया जाता है। इन्होंने मैक्सिमम काम किया हुआ हेल्थ ट्रेड्स को लेकर के, ना कि प्रोडक्शन ट्रेड्स को। प्रोडक्शन इनका सेकेंडरी रहा है, हेल्थ प्राइमरी रहा है। इसीलिए जर्सी में अपने को लॉन्जेविटी का मतलब होता है ज्यादा दिन तक वो हमारे साथ रहेगी, यानी ज्यादा व्याप तक दूध देने के लिए, और वो हमारे लिए शायद जरूरी है क्योंकि इंडिया मालूम है आपको। I also noticed from our previous speaker about injections and antibiotic. Yes, and I can tell you we have the lowest use of antibiotic in the world. It's 40 times less than in US. डेनमार्क जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां पर ऑलमोस्ट 40% लेस एंटीबायोटिक का कंजप्शन होता है एज कंपेयर टू अमेरिका या बाकी बात करें। मे बी ड्यू टू ट्रेड डिफरेंस ऑल्सो, और जो ट्रेड्स जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। एचएफ में तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक थी, अपन लोग सभी लोग ट्रकों के हिसाब से एंटीबायोटिक यूज करते हैं। Okay. So coming back to when I say we breed for health and production, these are production figures where you can see where we are compared with other countries in the world. So even though we breed for healthy cows, happy farmers, it's not on. We're not hurting our production. मेन फैट और प्रोटीन के ऊपर कंसर्न है। फैट और प्रोटीन मतलब अपने यहाँ इंडिया के लिए ज्यादा कॉस्ट। So these are the figures that we register, and you can see we improve our genetic. In average, we have a 3% improvement each year, or from each bull to the next generation.
that's the progress we have in our genetics. ये पहले लगभग 2007 से लेकर 2017 10 साल के अंदर अंदर जर्सी के ऊपर जो काम हुआ है उसमें ये लोग जो पहुंचे हैं, जब हम प्रोडक्शन की बात करें तो एचएफ लेवल की प्रोडक्शन की बात करें 10,000 लीटर की, हम बोलते हैं कि जर्सी का प्रोडक्शन तो केवल 7,000 है, लेकिन जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं ईसीएम यानी एनर्जी करेक्टेड मिल्क में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसका फैट परसेंटेज ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, तो जब हम उसको ईसीएम में कन्वर्ट करते हैं तो इट कम्स टू 9,520, मतलब इट्स सिमिलर टू एचएफ यदि हम उस तरीके से कंपेयर करें तो, एप्पल टू एप्पल यदि हम कंपेयर करें। Yeah, this is just 1 second. Yeah, again, oh sorry. This is the development in the production over the years, as you see there. The same as the other one actually, and a bit more. And I know, for instance, up here, our target in our breeding managers' target and expectation, that is to reach 6.2% fat within the next 5 years, and that will also come. अगले 5 साल में जो काम हो रहा है उसके ऊपर लगभग 6.2% फैट तक पहुंचने की गुंजाइश है। So, talking about Jersey being a profitable producer, well, they are far smaller than the Holsteins, and I'm not talking bad about Holsteins because Holsteins is also one of our breeds. We have 3 breeds, and it's actually a very big breed also. But it's a fact, it's much smaller, so you can see our average, and we try also not to exceed 130. This is also within our breeding policy because we don't want to have big animals, we want to have productive animals. छोटे एनिमल जो हमारे मतलब देसी एनिमल के बराबर के लगभग साइज के एनिमल 130 सेंटीमीटर यदि हम कंपेयर करें 149 150 सेंटीमीटर के एचएफ की तरफ कंपेयर करें तो ये काफी छोटा एनिमल है। And if you see in terms of solids, the difference between the Jersey and the Holstein isn't that big actually for the fat. A little bit difference for the protein, but it's a much smaller animal producing almost the same. लगभग यदि बात करें प्रोटीन हमको प्लस साइड में मिल रहा है, और यदि ईसीएम की बात करें दोनों एचएफ और जर्सी के ईसीएम की बात करें तो लगभग बराबर प्रोडक्शन हमको मिलता है। So if you look at the size of the animal and compare it to how much it produces, a Jersey actually produces around 20% of its body weight, or 20 times its body weight in milk, and whereas Holstein, that's about 16 times the body weight. छोटे साइज के एनिमल है, लगभग 450 केजी का एवरेज बॉडी वेट है। जर्सी का यदि एचएफ को कंपेयर करते हैं 625 केजी से, तो छोटा एनिमल है, मतलब अपने बॉडी वेट के लगभग 20 टाइम्स मिल्क प्रोड्यूस करता है लैक्टेशन वाइज, और हॉलिस्टीन जो है वो लगभग 16 टाइम्स जो है मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। And one advantage with the Jersey is also that being a small animal, it doesn't stress that much, it doesn't require that much feed and water, and that way also it's better adapted to warm climate. छोटा एनिमल है तो फीड भी कम लगेगा उसको, पानी भी कम लगेगा, और एनवायरमेंटली अडॉप्टेशन भी बहुत फास्ट होगा। So you could say it's feed efficient. You save feed, and by saving feed and reducing, then you also have less, or you have less emission. It's maybe not a topic at the moment. Yeah, it could be a topic, maybe not now, but in the future. Yeah. Environmental concern की जब भी हम बात करते हैं, हम ग्रीन अर्थ की, सेव अर्थ की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि हमारे जो ओजोन की इसकी सारी जो इतनी कहानियां कह रहे हैं, ये ऑलरेडी इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जर्सी, क्योंकि जर्सी कम खा रही है तो उसका इमिशन भी कम है, तो हमारे एनवायरमेंटल उसको भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। This is just a comparison over the year where you see the difference between the Holstein and the Jersey in dry matter intake. मतलब कम खा करके भी ड्राई मैटर इनटेक कम होकर के भी ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तो एज कंपेयर टू हॉलिस्टीन। And that's about going back to the emission.
where you can see, for instance, the jersey, where I have it here. It takes less footage and produces, or it has lower emission for the per intake. इमिशन का डिफरेंस है दोनों में हॉलिस्टीन में और उसमें कॉन्सेंट्रेट खाने के बाद में हॉलिस्टीन के इमिशन ज्यादा, फॉरेज के बाद भी हॉलिस्टीन के ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू जर्सी. This was a study we started in 2012 where we have started to measure emission from the cows. And I know this year we will have a feed efficiency index on all our bulls as well. अभी ये 2012 की स्टडी है, इस साल इनकी और एक नई स्टडी आने वाली है, उनके ऊपर नए कुछ उसके ऊपर में काम कर रहे हैं. ये इमिशन की जो स्टडी इन्होंने की थी 2012 से जो स्टडी की थी वो. Yeah, that's again simple math. You can calculate, what brings you the most value. You have a smaller cow eating less, producing almost the same, so they are more efficient to convert feed into milk. सीधी सी बात है, एक सिंपल सा मेथड है, कैलकुलेशन है, अपन सभी कर सकते हैं. 80% जो हॉलिस्टीन के कंपैरिजन में 80% खाएगी, 20% की वहाँ बचत होगी, लेकिन दूध बराबर मिलेगा. You can see here they use less land, require less land, but more important, less water. छोटा एनिमल है, जगह भी कम चाहिए, पानी भी कम पिएगा, खाएगा भी कम. And this one, the carbon footprint, I know it will become a topic because I know also some end customers required it. It goes back to the dairy farm, then it comes back to the farmer. So everything is connected. 20% जो है वो लेस इमिशन है, तो कार्बन फुटप्रिंट्स की यहाँ बात है. अभी तो नहीं, लेकिन बट आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे और कार्बन सेल की और उसकी भी बात करेंगे अपन आने वाले कुछ सालों में. शायद हम भी हमारे लिए बहुत अगली होगा ये. But I would also say that what we do, for instance, it comes in all the same product. Actually, there is no change in the quality, no change in the performance, no change in the price. But it is just an add-on and a very nice one to know. But you can select in that direction if this is what you want. So it's a high producing and efficient cow, and we focus very much on health and reproduction. So this is where we are. I can't almost see it. Yeah. Digital dermatitis. Yes. ये डिफरेंट जो डिजीज है जो हेल्थ कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया हुआ है, वो हेल्थ कैरेक्टर्स की बात है. 68.4% जो है वो जर्सीज आर हेल्थी, मोर हेल्दी रहती हैं वो एज कम्पेयर टू यदि अपन किसी दूसरी ब्रीड के साथ कंपेयर करें तो. और बाकी जो जैसे अलग अलग वो है, जैसे सोल हेमोरेज वगैरह, खासकर खुर में घाव होने की यदि बात करें, अपन डिजिटल डर्मेटाइटिस की बात करें, तो खुर के बीच में घाव हो जाता है उसकी बात करें, तो उन सब में ये काफी कम है. And these are figures from almost 80,000 animals, hoof trimmers, yes. So compared again, if you do a Holstein and a Jersey, you can tell that the Jersey they have stronger hoof, so better hoof health. जर्सी के और हॉल्स्टीन के अभी तक जो हूप हेल्थ के जो फिगर्स हैं, जो डाटा अवेलेबल उन डाटा पे यदि बात करें तो जर्सी जो है 68.4% ये ज्यादा हेल्दी है बिना किसी डिजीज के. खास करके सिर्फ लेमिनेटिस की बात हो रही है, लेमिनेस की बात हो रही है, हूप्स की बात हो रही है. तो ये जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं ये हूप ट्रिमिंग से डाटा कलेक्ट किए गए. हो सकता है हमारे यहाँ इससे कई गुना ज्यादा समस्या हो, क्योंकि हमारे यहाँ काफी सारी चीजें ना अनरिकॉर्डेड रहती हैं. These are also average figures for what do we see? Ichthyosis, other metabolic diseases, feet and leg problems. These are the levels that we are at. I'll just give it. ये सारे हेल्थ ट्रेट्स हैं, अलग अलग जो हेल्थ ट्रेट्स हैं वो सारे कुछ 10% से नीचे हैं. हॉलिस्टीन में काफी ऊपर है. And that's the frequency you can see here for the first 3 lactations. Yeah. General health. You can see. कल स्लाइड दिख रही होगी सबको, बहुत इजीली और क्लियरली अंडरस्टैंडिंग है, दोनों का डिफरेंस है.
And you can see compared to the Holstein, they're easier, to give birth. But apart from that, almost the same all the way down. Feet and leg is slightly better than compared with the Holstein. So other health, that's mastitis frequency after 3 lactation, around 14 for the Holstein and the same for the Jersey. So no difference there. मैस्टाइटिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ब्रीड में मैस्टाइटिस होने की संभावना बराबर लगभग, क्योंकि हाईली प्रोड्यूसिंग है. The carvings are easier, and especially if you compare, these are US Holsteins versus Danish Holsteins. There you can see there is a difference in ease. But if you look into the Jerseys, they are both at a very, very low level, so they have no problem in general. Carving ease मतलब डिशोकिया वगैरह की कंडीशंस जो हैं वो बहुत कम है. If we look into the stillbirth, they are also at a very low level compared with the Holstein, but especially compared also with other countries. हॉलिस्टीन की यदि अपन बात करें तो स्टिल बर्थ मरा हुआ बच्चा देने की जो संभावना हॉलिस्टीन में सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जर्सी. हॉलिस्टीन बहुत आगे है. And it's the same for every figure, regardless of what we look at. ये सारा मेरे ख्याल से स्लाइड सेल्फ अंडरस्टूड है. एजेड फर्स्ट कविंग जो है वो छोटी ब्रीड है, छोटा है, जल्दी बच्चा देती है. The fertility, if we look into that, again you can compare it with a Holstein. The interval is shorter, and you can see the number of inseminations are fairly low for both of them. Jersey, they have the highest conception rate as cows. Normally, if you see here. But this is compared with the Holstein. Longevity, it's a long-lasting cow, and maybe you can explain about it. If you look into the fertility and growth. लॉन्जेविटी मतलब ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि कम बीमारियां हैं, कम प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ज़्यादा लंबे समय तक कायम रहेगी हमारे पास में. ये एक्चुअली एनटीएम मतलब ये एक तरह का एक डाटा रिकॉर्डिंग का एक सिस्टम होता है. ये लोग जो नेट मेरिट निकालते हैं उसमें बहुत सारे चीज़ों को, ट्रेड्स को कंपेयर करने के बाद में निकालते हैं, तो उसके हिसाब से ये दिखाते हैं कि क्या चीज़ बेस्ट है. तो वो इनका अपना तरीका है, हर कंट्री का अपना एक अलग तरीका होता है निकालने का. If you see compared with the Holstein, you can see over a lifetime what will bring you the most value, and in this case here, there's no doubt it'll be the Jersey. So longevity again, the population average from first calving to end of circle lactation. So I don't know if you have any questions, but if you have. Sir, what about the milk A1, A2? He's asking about the A1 and A2. A1 and A2. For the jerseys. For the jersey. I believe we are 85% of all our jerseys are A2 at the moment. A2. Yes. 85% jersey जो है वो A2 है. So this is again a good factor. Actually, it's something that we found out a few years ago, because it's not really considered to be special in Denmark, but it is special in other places in the world. So we did a study, and we focused on it, and it showed that we are slowly growing. Currently, we have 85% of all our bulls giving A2. As a general information, I can say we have about 800 bulls, and we produce conventional and sex semen. And we have the 3 breeds: Holstein, Jersey, and what we call Red Bull. Red Bull. Red Bull, yeah. It's Viking bred. It's Finnish Asia in Finland. It's old traditional Danish breed. They also make breeds. Sorry?
That's a little bit. Yeah. A little bit. Yes. Yes. That's a local But breed. more popular in Scandinavian countries. Yeah, it is. इंडिया में अलाउ नहीं इंडिया में अलाउ नहीं And India is only open for us for two breeds, Yeah. Jersey and Holstein. But thank you very much for your attention. तो ये छोटा सा एक नया एस्पेक्ट था कि क्या जर्सी की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं, और वो शायद हमारे लिए एक बेटर टूल प्रूफ हो सकता है, जहां हॉल्स्टीन पे शायद थोड़ा सा स्ट्रगल है फार्मर्स को, और है सभी लोग जो ह्यूज क्वांटिटी में रखे हुए हैं वो देख रहे हैं इस चीज को। तो कोई बुराई नहीं है कि हम एक पार्ट है तो थोड़ा नहीं बहुत है। प्रिंस का कहना थोड़ा नहीं बहुत है। हाँ बिल्कुल जी, थैंक यू। हॉल्स्टीन और जर्सी में टेम्परेचर ज्यादा कौन सा कर सकता है? हाँ, इसमें मेरे ख्याल से एक स्लाइड थी ना जो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा, कल 45 था, 47 भी चला जाएगा। बिल्कुल। और दोनों में से कौन सा छोटी टेम्परेचर ज्यादा थोड़ा सा उन्हीं से actually he's asking regarding how the Jersey can sustain the higher environmental temperature as compared to Holstein. They first of all they don't if you are a bigger animal, you do require, it takes more energy for you to reduce the heat, get rid of the heat. So in that respect, the Jersey is actually much better adapted to the warmer climate than, for instance, the Holstein. And also we sell quite a lot of Jerseys in warmer countries like Africa and also other parts in Asia and South America. So this is our experience. चूंकि जर्सी का साइज छोटा होता है, हॉल्स्टीन का साइज बड़ा होता है, तो उसको हीट डेसिपेट करने के लिए भी उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है हॉल्स्टीन को। ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट, जब ज्यादा एनर्जी लेगी हीट निकालने के लिए भी, तो खाएगी तो अंदर से भी हीट ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए वो टेम्परेचर सस्टेन कम कर पाती है एज कम्पेयर टू जर्सी। दूसरा, इन्होंने जर्सी जो है वो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ टेम्परेचर हमारे से भी ज्यादा रहता है, 49-50 टेम्परेचर जाता है, वहां पर भी जर्सी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है मेरे ख्याल से। थैंक यू ब्रायन, थैंक यू।